We'll start chapter number 3. Chapter number 3. Kinetic energy I got it. Potential energy frequency. ठीक है. So let's do the sums first. Come to chapter number 5. Okay. Sorry, chapter number 3. Okay. So write down certain formulas. Write down important formula. Chapter number 3 heading दे दो and write down important formula. Chapter number 3 important formulas. Right? You know that when three resistors R1, R2 and R3 are connected in series, the total effective resistance when R1, R2 and R3 are connected in series, the total effective resistance is equals to R1 plus R2 plus R3. When resistors are connected in series. When resistors are connected in series, the total effective resistance RS means resistance connected in series is equals to R1 plus R2 plus R3. When resistors are connected in parallel, the total effective resistance RP का relation with R1 and R2 and R3 is given as 1 upon RP is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon RP. Getting? This is the second formula. Then the current flowing through the circuit. है ना? Current का formula क्या है? Define electric current. Define electric current. Define electric current. What you did at home? What you did at home? Define electric current. Huh? What? Yesterday you studied computer. Today at what time you came from the school? What you did from 10 to 3? What you did? Huh? You don't know the definition of current. Define current. The amount of charge flowing through a particular cross section area in unit time. The amount of charge flowing through a particular cross section area in unit time is called as electric current. So what is the formula for electric current? It is the amount electric current I is equals to the amount of charge Q flowing through a particular cross section area in unit time. So I is equals to Q upon T. What is I? I is nothing but current. What is I? I is current. What is Q? Q is the charge flowing through the cross section area. T is the time in which the charge is flowing. So current I is equals to Q upon T. Getting? इतना समझ में आया? Current I is equals to Q upon T. Then we'll be looking at the formula of Ohm's law. ठीक है? Ohm's law gives you the, everyone look here. Ohm's law gives you the relationship between current, potential difference and resistance. Right? Current is I, potential difference is V and resistance is R. Gloria. Right? Ohm's law. State Ohm's law. State Ohm's law. State Ohm's law. This is what you studied. This is how you have prepared for your exams. Then, and if Victor will scold, Victor is bad. Oh, Victor, I see you. स्वरा बताओ Ohm's law.
Ohm's law states that the current flowing through the electric current flowing through the conductor is directly proportional to the resistance. Is directly proportional to the potential difference between the two endpoints of the conductor. Condition भी है बताओ. Starting. So Ohm's law states that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied between the ends. Given that the physical states like temperature, The physical states of the conductor like temperature, area of cross section, then what Gloria? Sorry. Now what reason you have? Nothing, sir. What you did from 10 o'clock? Don't lie. What you did Computer. today? No, from today. Today after coming from the school, what you did? After coming from school, I I did did nothing. nothing. Very good. ऐसे ही रहो, ठीक है? बेटर. ऐसे ही रहे. कल भी कुछ नहीं करेगा, परसों भी कुछ नहीं करेगा. 9th में कब मत मानेगा. ठीक है? ऐसे ही रहना. Good बच्चा. Sit. So, at the end, you have an equation. What is that equation? V is V equal to IR. is equals to I into I. ठीक है? This equation is for Ohm's law. ठीक है? Ohm's law derivation. ठीक है? ये फॉर्मूला होगा. इसके बाद we will be learning something called as resistivity. Okay? Resistivity. What is resistance? Define resistance. Define resistance. Define resistance. When something blocks Something blocks, comes and blocks. See, I don't want your words here. Tell me what is in the textbook. What's your name? Arya. Arya, say. What is resistance? Go. Resistance is the conductor. Resistor is the property of a conductor flowing through a electric current. Wow. Wow. बैठिए. आपका जवाब गलत है. आप बैठिए. फेल हो जाओगे आप. पक्का. 40 में से you won't get even 15 marks. I bet you. You don't know resistance. What is resistance, Arya? Arya not. Arya no? What is resistance? What's your name? Sark, what is resistance? Resistance is the property of a conductor. Resistance is the property of a conductor to oppose the flow of current. Resistance is the property of conductor by which it opposes the flow of electron. ऐसा भी बोलो. It is the property of a conductor by which it opposes the flow of electric current. बैठो. What is resistivity? कल बताया था. Resistivity is the resistance of a conductor with unit length and unit area of cross section. क्या बोलने का? Resistivity is the resistance of a conductor having unit length and unit area of cross section. समझा? Now there is a formula for resistivity. अभी resistance का तो formula इधर से भी निकाल सकते हैं. बराबर ना? R will be equals to V upon I. Getting? Now, so now we'll be seeing what? Resistivity. Resistivity का formula क्या आएगा देखो. Resistance is equals to
रेसिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए, ये एक फॉर्मूला हो गया। तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। getting? These are the two formulas you need to remember. This is for resistance. Okay? ये क्या हो गया, रेसिस्टिविटी, ठीक है। सो रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस। फिर आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बताओ। ये सब सिखाया था श्रुति मैंने इनको, सोच, तो भी इनको नहीं आता, अब क्या करें। देखो वो बच्चा लेक्चर में नहीं था तो भी वो पढ़ के आया, रात को मेरे को फोन करके बोला सर देखो मैंने सब पढ़ के हो गया, तुमको इतना गिर गिर के मर मर के सिखाने के बाद भी एक डेफिनेशन नहीं आता पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ बताओ। The difference in the potential difference between the positive terminal and the negative terminal. The difference is potential difference, वो ठीक है, लेकिन एकदम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक डेफिनेशन बताओ। हाँ, it is the work done, हाँ बोलो। The amount of work done in carrying a unit positive charge from one point to another point. The amount of work done in carrying a unit positive charge from one point to another is called as what? Potential difference का फॉर्मूला क्या? Potential difference is equals to work done upon charge. Right? ठीक है, तो इतना फॉर्मूला आना चाहिए, तब क्या आएगा, सम आएगा, बराबर ना, न्यूमेरिकल्स तब आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल, ठीक है, रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल कर दे। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो, मैं बोलता हूं, राइट डाउन, but you want to write these formula, write this. So first we'll be looking at such type of sums related to resistance in series and parallel. They would give you three resistance, okay, and they would ask you the effective resistance. First, whenever you read the sum, you need to look whether the resistors are connected in series or in parallel, and accordingly you will apply the formula and do the sums. Write on the question, three resistors having resistance, 15 ohm, 3 ohm and 4 ohms. Three resistors having resistances 15 ohm, 3 ohm and 4 ohm are connected in series. एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं? खेलने जाने का 5 तारीख। What is the effective resistance in the circuit? What is the effective resistance in the circuit? What is the effective resistance in the circuit? ठीक है, बोलो कितना रेजिस्टर्स है? 3। तो रेजिस्टर्स क्या है? 15 8 ओम, 3 ओम, 15 ओम एंड 4 ओम। तो लिखने का ऐसा, three resistors, no talking, R1, R2 and R3 are connected in series. So R1 is 3 ohms, right? R2 is 15 ohms. R3 is 4 ohms. You need to find the total effective resistance RS. Getting? So I'll write RS is equals to question mark. Then I'll write we know that, हमको ये पता है
The RS is equals to R1 plus. So RS will be equals to 3 ohm plus 15 ohm plus 4 ohm. 3 plus 15, 18 plus 4, 22 ohm. So you'll write therefore the total effective resistance is 22. समझा सबको? चलो लिखो जल्दी. Next question. Right on. Resistors having resistances. संस्कृति तो कब मेरे जैसा बनेगी? देखो, resistors having resistances of 15 ohm. Resistors having resistances of 15 ohm, 20 ohm, and 10 ohm, are connected in parallel. What is the effective resistance in the circuit? What is the effective resistance in circuit? What is the effective resistance in circuit? So 3 resistors, right? Now the question, the resistors are connected in parallel. What are the 3 resistors? R1, R2 and R3. Now they are connected in parallel. And what are they? Value R1 is given to you as 15 ohm, R2 is given to you as 20 ohms, R3 10 ohm. And you need to find the total effective resistance Rp. Okay? That means resistors are connected in parallel. We know that. Now the formula will change, right? Whenever resistors are connected in parallel, क्या होगा? 1 upon RT equal to 1 R1 plus 1 upon RT is equal to 1 upon R. समझा? Now Rp ढूंढना है तो वो वैसे ही रहेगा. R1 is 15, R2 is 20, R3 is 10. अब जब भी फ्रैक्शन सॉल्व करना होता है, one is you can cross multiply, the other one is you can make the denominator same by taking the LCM, least common multiple. मतलब ऐसा नंबर जो 15 में भी डिवाइड होगा, 20 में भी डिवाइड होगा, 10 में भी डिवाइड होगा. और ऐसा बोल सकते हैं 15 को उस नंबर पे हमको कन्वर्ट करना है. ठीक है? तो 15, 20 और 10 तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या रहेगा? 5. अरे लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं पता. 15 का मल्टीपल लिखने का. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45. 60. समझा? हाँ क्या है? 60 है ना. 15 का सबसे पहला नंबर कौन सा है? 60. वैसा 20 का मल्टीपल देखने का तो 60 आता है. वैसा 10 का 60. तो तीनों में 60 पहला कॉमन मल्टीपल रहेगा. समझ रहा है? तीनों का क्या रखने का? जैसे कि 2 और 3 में कॉमन मल्टीपल क्या? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. 3 में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. तो सबसे पहला कॉमन क्या है? ऐसा 15, 20 और 10 तीनों नंबर का जब हम मल्टीपल्स लिखते हैं, सबसे पहला कॉमन नंबर क्या आएगा? 60. समझा? तो 60 क्या हो गया? 15, 20 और 10 का लीस्ट कॉमन. तो मैं 15 को 60 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4. तो मैं इंटू 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे करेगा. समझा? आया ना? 20 को इंटू 3 फिर 10 को इंटू 6 और समझ में आया? दिमाग में गया? अगर दिमाग में नहीं जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है ना? 20 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से.
15 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर ये 15 किससे मल्टीप्लाई होगा 20, बराबर ना? ठीक है, तो ये क्या होगा 4 अपॉन प्लस 3 अपॉन प्लस 6 अपॉन, समझ में आया? 1 upon rp is equals to, whenever the denominator is same, तुम कॉमन डिनोमिनेटर 60 लोगे और न्यूमरेटर को क्या करोगे, समझा? तो 1 upon rp will be equal to 13 upon 60, ठीक है? 13 के टेबल में 60 जाते क्या? नहीं, पक्का नहीं ना? तो फिर क्या हो जाएगा आरपी? अब ये 1 अपॉन आरपी का वैल्यू नहीं ढूंढना, आरपी का ढूंढना है, मतलब रेसिप्रोकल होगा ना, तो आरपी क्या हो जाएगा 60 अपॉन 13, ठीक है? 60 अपॉन 13 इज नथिंग बट 4.615 ओम्स, समझा? चलो लिखो, ये लगा डाउट क्या? यू हैव डोगा when two resistors are connected in series, when two resistors are connected in series, when two resistors are connected in series, their effective resistance is 80 ohms. Their effective resistance is how much? 80 ohms. Their effective resistance is 80 ohms. When they are connected in parallel, when they are connected in parallel, when they are connected in parallel, their effective resistance is 20 ohms. Their effective resistance is 20. When two resistors are connected in series, their effective resistance is 80 ohms. And when they are connected in parallel, their effective resistance is 90 ohms. You need to find what? You need to find values of. तो अच्छे से ध्यान देना, क्वेश्चन क्या समझा तुमको, क्वेश्चन में क्या समझा? हाँ, टू रेसिस्टर्स है, ये दोनों रेसिस्टेंस अगर पहले हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना है 80, टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस मतलब आर एस कितना है 80, तो मैं लिखेगा ऐसा, लेट R1 and R2 be two resistors, ठीक है? When connected in series, when connected in series, RS is equals to 80 ohms. यही दिया है ना? When it is connected in series, the total effective resistance is 80 ohms. इसका मतलब है, you know that RS is equals to R1 plus R2, बराबर ना? Whenever resistors are connected in series, the total effective resistance is equals to R1 plus R2. But how much is RS? RS is 80. So 80 will be equals to R1 plus R2. इतना समझ में आया? अब इसमें से एक वैल्यू निकाल लेने का, एक वैल्यू निकालने का, जैसे कि समझो मैंने लिया R1. R1 will be what? 80 minus R2. ठीक है? अब तुम बोलेगे सर ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमको आगे पता चलेगा. इतना समझा? When resistors are connected in series, I got R1 is equals to 80 minus R2. Now resistors are connected in parallel. When resistors are connected in parallel, बैठो. When resistors are connected in parallel, what is the total effective resistance? What is the total effective resistance? Read the question. 20. The total effective resistance is
24. That means what is 20? RP is 20 ohms. But what is the formula for RP? 1 upon RP के जगह पे 3 नहीं है ना, 2 ही रेजिस्टेंस, तो इतना ही आएगा। RP कितना है? 20। तो ये क्या हो जाएगा? 1 upon 20 is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. This I'll give it as number 1. इतना समझा? इतना समझा क्या किया? तो R1 ये मिला, R2 ये मिला, ठीक है। ये दूसरा जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल का वैल्यू दिया उसका। अब now what you will do, I'll substitute this value in equation number 2 and I'll merge the equations. समझ रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को मैं क्या करेगा? मर्ज करेगा। तो I'll write substitute, नहीं तो डायरेक्ट लिखो from 1 and 2। अब R1 के जगह पे what I'll write? 80 minus R2, तो ये क्या हो जाएगा? 1 upon 20 will be equal to 1 upon R1 के जगह पे what I'll write? समझा सबको? प्लस 1 upon R2। इतना समझा? अब मुझे बोलो किसको क्या नहीं समझा? नहीं समझा तो पूछो, लेकिन ये बताओ कौन सा स्टेप नहीं समझा? ये समझा क्यों लिखा ऐसे? क्यों लिखा? हाँ, ये ऐसा क्यों लिखा? समझा? फिर क्या किया? हमको वैल्यू चाहिए ना, हमको R1 R2 का वैल्यू चाहिए, इसके लिए दोनों को क्या किया? समझा? मर्ज करने के लिए पहले इक्वेशन में R1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R2 मैंने ढूंढा, फिर उसको मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये हो गया 1/20। अभी ये R2 into 1 is R2 प्लस ये 80 minus R2 into 1 is 80 minus R2। इतना समझा? अपॉन 80 minus R2 into R2, बराबर ना? ऐसी होगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई। फिर मैं सॉल्व करेगा, 1 upon 20 will be equals to, अब ये R2 और ये R2, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया? 80। समझा? Now 80 into R2 is 80 R2 minus R2 into R2 is R2 square। समझा? R2 into R2 क्या हो गया? R2 square। अभी क्या होगा? अभी वापस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना? ये इक्वल टू के इस तरह पे, ये दोनों टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा, 20 किससे मल्टीप्लाई होगा? बराबर? ये दोनों टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा? 80 R2 minus R2 square। समझा? This is equals to 20 into 80 160। रेडी? फिर क्या करो? सबको इधर लेके आओ, समझा? तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। देखो जब R2 इधर आएगा तो क्या आएगा? प्लस R2 स्क्वायर, am I right? नहीं तो एक करो, ये इसको इधर ले लो 60, तो क्या आएगा? माइनस R2 स्क्वायर प्लस 80 R2 माइनस 1600 इक्वल्स टू 0, बराबर? अब ये नेगेटिव है, इसका साइन सब चेंज कर देते हैं, ऐसा चेंज कर सकते हैं, मालूम है ना? एक का साइन किया तो सबका साइन क्या करने का? तो ये क्या हो जाएगा? R2 स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 80 R2 प्लस 1600 इक्वल्स टू 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है? How I'll solve the quadratic? What is the third term there? थर्ड टर्म क्या है? 1600। मिडिल टर्म क्या है? So third term is plus 1600, middle term is minus 80। तुमको क्या करना है? दो फैक्टर्स ढूंढना है। Now what my factors will be? What my factors will be? मल्टीप्लाई करके 1600, ऐड करके 80, 4 और 40 और 40, बराबर ना? 40 into 40 is 160, 40 plus 40 is 80, am I right? What are the factors? 40 and 40। थर्ड टर्म पॉजिटिव है, दोनों को सेम साइन, लेकिन साइन किस पे डिपेंड करेगा? दोनों को माइनस। समझा? तो अभी सॉल्व करते हैं हम लोग। R2 स्क्वायर माइनस
80R2 plus 1600 equals to 0. तो ये R2 स्क्वायर, अभी इधर क्या आएगा माइनस 40R2 माइनस 40R2 प्लस 1600 इक्वल्स टू 0, राइट. ये दोनों में कॉमन फैक्टर, ये दोनों में कॉमन फैक्टर, ये दोनों में कॉमन क्या है R2 कॉमन. तो इधर अंदर क्या बच गया इधर कॉमन क्या है 40, समझा. ब्रैकेट में आएगा R2 माइनस 40 इक्वल्स टू 0. तो ये हो गया R2 माइनस 40 इंटू R2 माइनस 40 इक्वल्स टू 0. तो R2 माइनस 40 इक्वल्स टू 0 और R2 माइनस 40 इक्वल्स टू 0. तो R2 इज इक्वल्स टू 40 ohms. समझा. R2 मिल गया 40 ohms. तो R1 क्या हो जाएगा 40. नो, R1 is equals to 80 minus R2, that is equal to 80 minus 40, that is equals to 40 ohms. So what is R1 and R2? 40 ohms. लिखोगे neatly. चलो लिखो. Sir, और कीजिए. ये दो वैल्यूज है ना इसके लिए. अगर the resistance of a 1 meter long nichrome wire is 6 ohms. The resistance of a 1 meter long nichrome wire is 6 ohms. If we reduce the length of the wire to 70 centimeter, if we reduce the length of the wire to 70 centimeter, what will its resistance be? What will its resistance be? तो सबसे पहला एक कंडीशन दिया है. क्या कंडीशन दिया है? बोला है कि the resistance of a 1 meter long nichrome wire is 6 ohm. मतलब एक वायर है, ये वायर का लेंथ दिया है और क्या दिया है रेजिस्टेंस दिया है. क्या दिया है लेंथ और रेजिस्टेंस. अब देखो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला था, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बराबर ना, यही था ना फॉर्मूला. व्हाट वाज द फॉर्मूला? R is equals to resistivity into length upon area of cross section. ये फॉर्मूला था, राइट. तो अब फॉर अ गिवन वायर, ओके, सॉल्यूशन डायरेक्टली कर रहा हूं मैं. फॉर अ गिवन वायर लेंथ is given to you as 1 meter. Length is given to you as 1 meter. Then resistance is given to you as how much? 6 ohms. समझा. So we know that resistance R, समझो इसको R1 लेते हैं, ठीक है. जब लेंथ 1 मीटर था तब R1 क्या है और लेंथ को L1 लेते, ठीक है. जब लेंथ, क्योंकि लेंथ और रेजिस्टेंस क्या हो रहा है चेंज हो रहा है. जब लेंथ चेंज हो जाएगा सेकंड कंडीशन में रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा चेंज. लेकिन कोई भी वायर का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टिविटी क्या रहेगा. यहाँ पे वही वायर है, सिर्फ उसका लेंथ कम हुआ है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है. यू आर गेटिंग. हमारे पास एक वायर है, वो वायर का लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर का वायर है, तो उसका कुछ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, समझ रहे, और उसका कुछ तो रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टेंस उन्होंने दिया है कि 6 ohms है. अब हम वायर का लेंथ को कम कर रहे, तो लेंथ को जब हम कम करते तब रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या चेंज होगा रेजिस्टेंस चेंज होगा. समझा. तो यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी सेम है, रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. समझ में आ रहा है. मतलब सिर्फ हम क्या कर चेंज कर रहे हैं अभी यहाँ पे लेंथ चेंज. तो जब लेंथ चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है. तो देखो वी नो दैट R रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, ये वैसे ही रहेगा, इनटू L1 अपॉन A. इतना समझ में आया.
तो R1 क्या दिया तुमको 6 ओम, ठीक है 6 ओम दिया है, तो 6 ohm will be equal to resistivity into 1 meter upon 1 upon A, area of place. इतना समझा? Getting? Now, एक मिनट। वो 8th स्टैंडर्ड को भी छोड़ना ही है क्योंकि अभी 10th आया उस क्लास में और 6 7th है। हाँ, छोड़ दो। 8th स्टैंडर्ड। Now, length is equals to how much meters? 1 meter. No, 70 70 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है? हाँ, L2 आएगा, बराबर? Now L2 is 70 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1 मीटर is equal to how much? तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, बराबर? तो 70 डिवाइड बाय 100 will be 0.7 मीटर। इतना समझ में आया? अब हमको R2 क्या करना है? ढूंढना है। R2 हमको पता है क्या? नहीं पता है, तो समझो हमने इसको लिया x ओम। इतना समझ में आया? तो अभी फॉर्मूला लगाओ। We know that R2 will be equal to resistivity into L2 upon A। समझा? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो R2 के जगह में क्या आएगा? x ओम is equal to resistivity into L2 is how much? 0.7 upon A। इसको देते नंबर 2। Now what is my third step? Dividing 1 and getting, I'll write from 1 and 2 6 upon x, right? लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हुआ, वो 6 और ये x डिवाइड हुआ इज इक्वल्स टू, अब वो राइट हैंड साइड और ये भी डिवाइड होगा, तो रेसिस्टिविटी इनटू 1 अपॉन a अपॉन रेसिस्टिविटी इनटू 0.7 अपॉन, तो रेसिस्टिविटी और a भी क्या क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया? 6 upon x is equal to 1 upon 0.7, तो 6 into 0.7 is equals to x। समझा? 1 into x is x, तो x will be equals to 4.2 ohms। समझा? Therefore, when the length of wire is reduced to 70 centimeter, its resistance changes to 4.2 ohms। समझ में आया? चलो लिखो। The next question: if a charge of 420 coulomb, flows through a conducting wire in 5 minutes, if a charge of 420 coulombs flows through a conducting wire in 5 minutes, what is the value of the current? What is the value of the current? What is flowing? What is flowing? Charge. है ना? So what is given to you? They have given you charge. Getting? Charge कितना coulombs? 420. Charge Q is equals to 420 coulomb. Right? It is flowing through the conductor for how many seconds? 5. चेक कर रहे हो तुम ध्यान में? टाइम इज इक्वल्स टू 5 मिनट के लिए फ्लो रहा है, लेकिन टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। को मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है? 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड? 5 मिनट विल बी इक्वल टू 5 into सेकंड, 300 seconds। कितना समझा? What you need to find is current I. What do you need to find? Current I is equals to question mark. Well, right. Current I is equals to charge upon time. What is charge? 420. What is time? 300.
ये 0 कट, बच क्या गया 42/30। ठीक है, क्या आएगा आंसर 1.31 फिर बाकी क्या आएगा 42 में से 30 गया तो 12, फिर 3 कितने 12 1.4 एम्पियर। समझा? चलो लिखो। So these are the sums of chapter 3. ठीक है? Now we'll be doing chapter 4 and chapter 5. I'll call you tomorrow also. ठीक है? पैंट को क्या ये चौक लगाया क्या? बहुत हो गया। पैंट ही नहीं मिला, चौक ही नहीं मिला। ये चौकी लगाया ना? और कुछ तो नहीं लगाया। ठीक है, अभी लग गया क्या? बहुत है, हंसेंगे टेंथ वाले। टीचर का पचका होता है।